अटैक 25 रु 45 वर्ष मध्य हेउछंती अधिक आक्रांत प्रतिदिन 900 रु अधिक व्यक्ति होउची डेथ प्रति गोटे मिनिट रे 4 जन को हेउची शिकार। मुंबईर मार्शल आर्ट चैंपियन मोहित शर्मा टूर्नामेंट खेलुथिला बेले हार्ट अटैक रे डेथ सेतेबेले तांकु केवल 21 वर्ष होइतिला। कोलकातार 26 वर्षीय युवती ऑफिस रे काम करुथुबा बेले सडन डेथ समस्त को आश्चर्य करिथिला। इंदौर रे गोटी बाहाघर रे नाचिथुबा बेले 23 वर्षीय युवती हार्ट अटैक रे डेथ अथवा गुजरात रे 28 वर्षीय क्रिकेटर बैटिंग करुथिला बेले चौका मारिबार 1 मिनिट पर हार्ट अटैक रे क्रीज उपरे टळी पड़िले। केवल सेतिकी नुहे सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली जरीवाला, पुनीत राजकुमार, केकेंको भली अनेक सेलिब्रिटी हार्ट अटैक रे सडन डेथ न्यूज पर आमे निश्चिंत भाबरे आम हार्ट को हेल्दी रखिबा पई चेष्टा आरंभ करिबा उचित। साउंड्स डिस्टर्बिंग राइट आउ यही सब न्यूज़ जोड़ाक मुझे डिस्कस करी से गुड़ी को हमको क्वेश्चन करुच्ची आमर बिलीफ सिस्टम जे केवल ओल्ड एज रे ही हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुए किंबा डिजीजेस बाहर तो यंग एज रे भी आजिकल डिजीजेस बहुत बहुत रैम्पेंटली देखा मिलूँ बहुत कॉमनली देखा मिलूँ तो या हमें प्रिवेंट केमती करवा से गुड़िक विषय में आमर सिंपल क्वेश्चंस किंबा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आंसर करने लगी आम सांगे अच्छा मोस्ट रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। नमस्कार सर। नमस्कार। सो सर आपण मत कहतु कि आपण निजर हार्ट हेल्थ पाई कौन करते फॉर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर कार्डियक हेल्थ। वो एक्चुअली हेल्दी हार्ट विषय जानिया पई तब से प्रिएम्बल टे जानिया पड़ो। हेल्दी हार्ट मीन्स हेल्दी हार्ट डाइट 1 नंबर 2 एक्सरसाइज द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सरसाइज 150 मिनट मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक किंबा 90 मिनट्स ऑफ इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी पर वीक। इट में 5 दिन सप्ताह 5 दिन एनफ। 2 टोबैको यूज इन एनी फॉर्म एंड अवेयरनेस ऑफ अर्ली डिटेक्शन डायबिटीज ब्लड प्रेशर एवं सेडेंटरी लाइफस्टाइल यही सब जिनसटी हूँ इंडियन पर्टिकुलर एशियन मानकर यहाँ हूँ भेरी कमन से ये सब जी गुड़िक कहली से कि मात्रा पालन कै। आजिकल आमर यूथ मासेस रे कार्डियक इश्यूज हार्ट अटैक्स तार अकरेन्स बहुत स्पीडिली बढ़ुची बहुत रैम्पेंट अच्छी तो यार कॉजेस कौन सर कौ जिनस को आप ब्लेम करेंगे एगुड़ाक रिपीटेडली अकर कर फ्रिक्वेंटली हबार आमर जी स्टडी अच्छी से स्टडी अनुसार आमर कोरोनरी डिजीज रक्त कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक है हार्ट अटैक एवं रिलेटेड डिजीज गुड़िक 10 वर्ष अर्लियर अमेरिकन किंबा यूरोपियन काउंटर पार्ट हुए। यार कारण जदिव इंडिया रे विशेष स्टडी है किंतु जेतिक स्टडी है नंबर 1 कॉज इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल नंबर 1 नंबर 2 एक्सटेंसिव यूज ऑफ टोबैको 3 very high incidence of diabetes and 4th is stress in life and taking unhealthy diet and some genetic factors which is not yet known किंतु ये सबुड़िक मिसई देले आमर जो कोरोनरी डिजीजटा एशियन पर्टिकुलर साउथ ईस्ट एशियन मानकर 10 वर्ष अर्लियर होची आते मोस्टली आम सबुड़िक सबसेट सबग्रुप एनालिसिस करवा it is a diet, use of tobacco and sedentary lifestyle, high incidence of diabetes and unhealthy dietary habits एगुड़ का प्रमुख कारण। सर टिके स्मॉल डिटेल्स को जिबा कि टोबैको केमिति डायरेक्टली ए टाइप रो इश्यूज को बेसी बढ़ावा दोची माने बढ़े केमिति दोची जिनसटा को आपण जति जिबे जेति कोरोनरी डिजीज रो कारण होची एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस कोरोनरी आर्टरी जोटा अछि तार डिफरेंट एनाटॉमी अच्छी इंटीमा मीडिया एंड एडवेंटिशिया अच्छी सो एनी इंजुरी टू द एंडोथेलियम जोटा इनर लुमेन जोटा अच्छी हार्ट आर्टरी सेटा जदि कौन
କାରଣରୁ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଅର୍ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ଦେନ୍ ସେଠି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ହେବ। ସେଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆକୁମୁଲେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାକ୍ ତିଆରି କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ tobaccoର compositions are thousands. Right. So I won't go into detail that, but what it does, it goes and injures the endothelial cells. Right. That is called a chemical injury. Once there is an injury or disruption of the endothelium, then the harmful substance जोड़ा अच्छे blood रे सेटा endothelium media भितर को जीवो. Once they go into that place, they start the process of atherosclerosis. Right. So ଆମର यूथ masses बहुत थर relaxation ପାଇଁ smoking भलिया habits develop करंती जेबे कि it is more injurious than do any good. Sleep रो किछि लिंक अछि कि cardiac arrest संगे रे? Yes. So you see, a healthy adult, the sleep, leave aside the elderly patients or in child, the sleep period is 6 hours or minimum 6 hours of a good sleep. Right. So there are different types of sleep, NERM, that I won't tell. But that sleep is hampered. The sleep is not of good quality, one. Number two, if the sleep is hampered by snoring, what you call OSA, so in those cases, these people are susceptible for coronary artery disease and several psychosocial disorders. Right. Sir, snoring जो issue टा आपण कहिले सेटा हमर जस्ट हमर ले पर्सन व्यूअर्स मानकर अंडरस्टैंडिंग पाई स्नोरिंग टा केमिति ग्रेजुअली कंट्रीब्यूट करे हार्ट हेल्थ को. So you say normally if somebody is suppose sleeping, there is no obstruction. Obstructive sleep apnea means there is obstruction in the upper airways. Okay. If there is obstruction in the upper airway means upon trachea and up to the mouth level, tongue fall back or more of fat tissue in the your throat. So that when the patient or person is asleep, everything is relaxed, so tongue falls. Okay. Once it falls, it obstructs the airways. So during inspiration, there is problem. Enough of oxygen doesn't go inside. Absolutely. And patient doesn't also exhale correctly. So that leads to carbon dioxide retention and low of oxygen. Resulting in snoring. Yeah. So that what you call is a type 2 respiratory failure situation. And once this remains for long time, if you observe somebody at your home, snoring house, you'll see their sleep is totally disturbed. They will be just ଏକଡ଼କୁ ସେକଡ଼କୁ ଉଠୁଥିବେ ବସୁଥିବେ ବସିକି ଉଠି ଏମିତି ହେଉଥିବେ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗପସପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଫେର ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଫେର ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଫେର ଉଠିବେ. So this is not in their knowledge. Right. This is only because of OSA, that is retention of carbon dioxide. This is a type of respiratory failure which happens time to time during the sleeping period. So on that note, sir, किछि एमती सुपर फूड्स अच्छे किंबा किछि मिथ्स अच्छे कि डाइटरी मिथ्स कि किछि फूड ग्रुप्स कैंसल आउट कर देले हमरा हार्ट अटैक्स की कार्डियक प्रॉब्लम किछि हबनी. देखो there is a lot of myths in cardiology and other also disciplines. So truth is always truth. For example, गोटे small example देबी. Blood pressure मापिबे, ब्लड प्रेसर अधिक कहे केवे औषध खाइबे. फास्ट क्वेश्चन तांकर हो जे मोर तो किसी असुविधा नहीं ब्लड प्रेसर कौन औषध खाइबे. किंतु ट्रुथ होची ब्लड प्रेसर जो थीबो ब्लड प्रेसर अधिक है तार सिम्पटम्स नहीं. सिम्पटम है माने गोटे कॉम्प्लिकेशन लाइक रेनल फेलियर, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस. सो सेतलको डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कले तार बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट लुजेस टोटली. सो से भाया सब गुड़ा बहुत मिथ अच्छे डाइट. मुझे खाली गोटे एग्जांपल देवी रिगार्डिंग ऑयल्स व्हिच हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया LAIUTEL. से कहूँ जे in Indian people, rice bran oil, then sunflower oil, canola oil,
preferable. But one may use also our sorish telo. Most important is quantity. Okay. One is it should be approximately 15 ml per day per head. Our most important part होची आमर जो रोषेई जो cooking टा once you boil the oil repeatedly and deep fry the food जो fat टा अच्छी तेल रे it is transformed to trans fatty acids. So the good oil after cooking Reuse. or reusing it becomes a bad oil. Right. So it has no meaning. ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ତ you cannot use always the new oil for the cooking, no? Same maybe leftover ସେଟା ଫେର use ହେବ ନା. Absolutely, sir. On that note, regarding the diet, ketata blogs and posts I have read about just having 1 tablespoon of a particular type of oil. Say olive oil ho, almond oil ho. Are these myths or they genuinely help with maintaining good heart health? No, it is total myth. Similarly ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଗୁଆ ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଲେ କିଛି ହେବନି it is safe, there is no atherosclerosis. That is not correct. ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର poly unsaturated fatty acid ଭଲ ବେଶୀ ଅଛି that oil is good. Saturated fatty acid ଯୋଉଥିରେ ଅଧିକା ଅଛି କିମ୍ବା trans fatty acid ଯୋଉଥିରେ ବେଶୀ ଅଛି that is not good. Because once you take trans fatty acids or upon saturated fatty acid, so it directly converted to LDL cholesterol को. Absolutely. LDL cholesterol है तो problem है ना. So से वाला भी कैथोलिक study रे भी देखौचंती. There is also scientific studies also, but there is not it prove any and also at times refuted. ଯେମିତି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ କେରଳରେ ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି କିନ୍ତୁ ଇଫ୍ ୟୁ ସି କେରଳରେ ଭେରି ହାଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋରୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍ କିନ୍ତୁ ପିପୁଲ୍ ସେ ୟୁ ଟେକ୍ वी आर टेकिंग नथिंग हैपेंस सो दिज आर ऑल मिस ऑन दैट नोट सर आमर पुरुष लोकंकर हार्ट हेल्थ एंड विमेन मानकर हार्ट हेल्थ एमानकर इंसिडेंस रेट्स ऑफ हार्ट डिजीजेस रे किछि डिफरेंस अछि कि ओडिसा हो कि इंडिया स्पेसिफिक जदि आपण किछि इनसाइट्स देबे I'll tell in general and particularly in developing countries हमर जो आपण जानथिबे जो हार्मोन अछि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन particularly एस्ट्रोजन प्रोटेक्ट करिवो अगेंस्ट कोरोनरी डिजीज ओके सो मेनोपॉज पर्यंत maybe 45, 50 years. If the estrogen level is high, cycles यदि सेमानकर ठीक होची, the chances of coronary disease बहुत कम. Okay. किंतु once menopause है गले, post menopause, estrogen level कमी गला, the ladies माने हो, स्त्री लोग माने हो तो, सेमाने they are particularly susceptible. सेमाने कोरोनरी डिजीज इंसिडेंस बहुत बढ़ी जाए यदि आप देखिए 65 years से यदि कंपेयर करेंगे मेल एंड फीमेल 65 years स्त्री लोक मान को कोरोनरी डिजीज हाइपरटेंशन डायबिटीज अधिक मात्रा रह जाए ओके बिकॉज वंस द ट्रांजिशन इज ओवर द चांसेस ऑफ गेटिंग यही सब जिन हबार चांस बहुत बेसी हो जाए कारण एस्ट्रोजन इज ए प्रोटेक्टिव हार्मोन ओके ये गोटे इम्पोर्टेंट कारण आउ जो सोशल रिजन्स जोड़ा अच्छी वुमेन मानकर देखिए पर्टिकुलर आम जो देखो से कंप्लेन गुड़ाक यूजुअली नॉट डिजीज स्पेसिफिक भेग एटी पेन होटी पेन हो चल बसिले हो शोले हो सो इट डजंट फिट टू एनी पर्टिकुलर डिसीज फिट न कले कन्फ्यूजन हाँ होता है ना हो पारे ये औषध खाऊ देखा सो दैट एग्रेसिवनेस ऑफ diagnosing and treating सेटा नहीं सर दिस इज वर्ल्ड वाइड डिफ्यूज माने ओटा जो कंप्लेंट करेंगे एटा संगे पेट मिसई देबे पेट गोड़ आंठू तो कोटा ताले एक्चुअल डिजीज सी गोटे सो डिजीज डायग्नोसिस लेट हुए डिजीज ट्रीटमेंट लेट हुए आउटकम भी लेट हुए सो से देखिए लेडीज मानकर यदि कोरोना डिजीज होची it is usually diagnosed late, treatment is given late and outcome mortality मृत्यु संख्या morbidity बहुत high
in you compare with male counterpart. This is all over world. किंतु सर देखा मिलूँ आजिकल इनसीडेंट्स रेट्स रे कि विमेन मानकर इवन इफ दे आर अंडरगोइंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकल्स सेते बेले भी दे आर डेवलपिंग हाइपरटेंशन तापरे आल्सो समटाइम्स हार्ट डिजीजेस तो याकू आपण को जिंस को हमें ब्लेम करबा या पई दैट विल कवर सो जो कॉमन रिस्क फैक्टर जोड़ा मैं आपको आगुर कहितली सेडेंटरी लाइफस्टाइल अनहेल्दी डाइट हाई इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज प्रेगनेंसी पीरियड रे दीटा तीनटा स्पेसिफिक डिजीज अच्छी जोटा प्रिडिस्पोज करे कोरोनरी डिजीज गोटा हूँ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस आउ गोटे डिजीज अच्छी जो हार्ट मसल फंक्शन कम जाए से कहते पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी ये जो दीटा जो डिजीज रहा तार इनसीडेंस अप्रोक्सीमेटली मे बी 5 to 10% तार इनसीडेंसटा बढ़ी जिते प्रेगनेंसी लेट हम लेट मीन्स आफ्टर एज ऑफ 35 ओके ये सब प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन के डायबिटीजटा बेसी मात्रा हो गले द चांसेस ऑफ cardiovascular disease developing during pregnancy and after pregnancy is high. So जो अपन जो क्वेश्चन पचारे ये जो रिस्क फैक्टर जोटा रहा ता सहित प्रेगनेंसी एसोसिएटेड फैक्टर्स मिसीगला सो सम ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन दे आर प्रिडिस्पोज टू दिस डिजीज किंतु अपन दे कंपेयर कर मेल काउंटरपार्ट इज डेफिनेटली मच लोअर ओके सर सो कमिंग टू मेल्स नाउ किछि एमती अर्ली इंडिकेशंस अच्छी लाइक जमती इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत प्रोमिनेंट है गलानी वे यंग मेल्स रे भी इज दैट प्रीडिस्पोजर टू हार्ट डिजीजेस that is very important question because as you know diabetes incidence बढ़ी गला hypertension incidence बढ़ी गला stress in life बढ़ी गला alcohol consumption बढ़ी गला tobacco बढ़ी गला ये सब पांचटा जिनस दे give rise to erectile dysfunction. One, medicine जोड़ा निया जाए for hypertension, for diabetes, many of them they cause also erectile dysfunction. So a situation this is a very important problem. So that solution is control blood pressure करो, diabetes control करो, औषध संख्या कम करो. That is not practical possible. और कीप योरसेल्फ हैप्पी केमती हम हेनी मत रोग एत गुड़ा रोग हो कौन हैप्पी कौन हेबी तादे स्ट्रेस इन वर्किंग प्लेस स्ट्रेस इन फैमिली इन एट होम कौन हैप्पीनेस आसो सो व्हाट दे डू ओवर द काउंटर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो मेडिकेशंस अवेलेबल होची फॉस्फोडाइएस्टेज 5 इनहिबिटर्स सिल्डेनाफिल एंड अदर ग्रुप्स देयर इज अ लॉट ऑफ मिसयूज वाइग्रा मिसयूज सो एटा सेटा सिल्डेनाफिल ट्रेनमेट्रा composition cell therapy is over the counter medicines so many people they misuse এই ওষুধের প্রবলেম হচ্ছে because vasodilation হয়ে গেলে ইন্টেন্স হেডেক করি হব ব্লরিং অফ ভিজন হব নেগেটিভ জিনিসটা কହୁଛି ମୁଁ ବ୍ଲରିଂ ଅଫ୍ ଭିଜନ୍ ହବ କାନ ମୁହଁ ନାଲ ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋରୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍ ଥିବ कोरोनारी सर्कुलेशन कम हो स्टिलिंग हो ब्लड सर्कुलेशन बाहर को पलि आसला हार्ट को कम है देयर आर मेनी इंस्टांसेस नॉट इंस्टांसेस मेनी रिपोर्ट्स एंड ट्रायल्स जो देखा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी हु हैव कंज्यूम्ड दिस मेडिकेशंस दे आर डेड यू फाइंड मेनी ऑफ देम दे आर टेकन दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन कारण ये मेडिसिन काम होची इंटेंस vasodilation जो उनका कोरोनरी आर्टरीज नैरोइंग थी ब्लड फ्लो कम हो दैट विल प्रॉब्लम दैट्स व्हाई बहुत आम बहुत लोक को काउंसिल करूँ नो फर्स्ट यू रूल आउट यू डोंट हैव ए कोरोनरी डिजीज यू टेक नो प्रॉब्लम सुपरवाइज्ड वे सुपरवाइज सो सेटा तो होनी सो दिस मिस यूटिलाइजेशन जो मान ब्लड प्रेशर अच्छी कि नहीं जानना से भी खाऊँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज अच्छी कि नहीं से भी जानना खाऊँ जो मानकर ये दुईटी अच्छी जिनस दे मे लैंड इन प्रॉब्लम लाइक दिस एंड यूजुअली इट इज ए सडन डेथ और ए हार्ट अटैक और एरिथमिया ओके सर कमिंग टू दैट पार्ट कि बहुत लोग काफ़ी टाइम रे फिट थांती
ତାଙ୍କର ମେ ବି 1 or 2 ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଥାଇପାରେ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ମେ ବି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଥିବେ ତା ମଝିରେ ଦେ ଗେଟ୍ ଅ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା କେଉଁ କେସେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଫିଟ୍ ଥାଇକି ବି କେମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କେତେଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ସଡନ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଡେଥ୍ ହୁଏ। ଓକେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମାନେ ଦେଖିବେ ମାରାଥନ୍ ରନର୍ସ, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି, they're fit. You find they're playing, suddenly they'll drop down dead. ରାଇଟ୍। So that is called କହନ୍ତି ଆମେ sudden cardiac death in young apparently healthy people. କେମିତି ହେଉଛି ତାର ମେନି କଜେସ୍। ମୁଁ ଖାଲି 3ଟି ଜିନିଷ କହିବି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହାଇପରଟ୍ରୋଫି କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି। ହାର୍ଟ ମସଲ୍ଟା ହେରିଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ଟା ହାର୍ଟ ମସଲ୍ଟା ମୋଟା ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ, ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଧଇଁସଇଁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ, ସେମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ସଡନ୍ଲି ବ୍ରେନ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ କମିଯିବ, ଦେନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଡେଡ୍। ଏବଂ ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କମିଯିବ। ଆନଦର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେରିଟେରୀ ଆର୍ଦିମିଆ, ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ, ଚ୍ୟାନେଲୋପାଥି ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଆମ ଟର୍ମରେ। ସେଇଭଳିଆ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲେ during play there will be sudden death. Even very small kids also they will die suddenly while playing. Okay. So ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଫର୍ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାହିଁକିନା ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଡୁଇଂ ECG, ଇକୋ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଂ, ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ବଟ୍ when ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଡେଥ୍, I think they should be screened. ECG or a small thing, ECG or echo may detect early. You may ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଯିବନି। That's it. ସୋ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇଠି ରହୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଅର୍ଲି ଏଜ୍ରୁ ବି ସ୍କ୍ରିନିଂଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ଆମକୁ କିଛି ବି ଇରେଗୁଲାରିଟି ଦିଶୁଛି, we should take supervision from as early as possible in time. Correct. Right? So on that note, sir, ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟସ୍ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି या फिर ଯଦି ଲେଟ୍ସ ସେ 35 କ୍ରସ୍ କଲେଣି କି 40 କ୍ରସ୍ କଲେଣି, ଦେ ସୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଗୋ ଦିସ୍ ଟେଷ୍ଟସ୍ ଟିକେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କିମ୍ବା କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେମାନେ କରିବା କଥା ସେଇଟା ବି ଯଦି ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟା ୱି ଫଲୋ 2 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, one is American College of Cardiology and American Heart Association guideline, and the European Society of Cardiology। ଏ ଦୁଇଟାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ଫଲୋ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କେତେ ଗୁଡ଼ିକର ଆସିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି guideline directed recommendation is very difficult to follow because it ବହୁତ costly ହେଇଯିବ ଟିକେ। Right. So ଆମେ individualized screening ଆମେ କରୁ। particularly premature atherosclerosis। premature atherosclerosis ମାନେ ହେଉଛି male less than 55, women less than 65 years ଯଦି family history ଅଛି, number 1 criteria। number 2, family history of hypertension, family history of diabetes, family history of hyperlipidemia। এই ଯେଉଁ subset ରହିଲା 5ଟି subset, ସେମାନଙ୍କୁ do screening very early from 18 years onwards। Okay. This is ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କହିଲେ as regards atherosclerosis, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇପରଟ୍ରୋଫି କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି ଅଛି, ସଡନ୍ ଡେଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ ଆରିଦମିଆସ୍, ହେରିଡିଟାରୀ ଆରିଦମିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରେୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବଟ୍ ୱି ସି ଅଲସୋ ଭେରି ଅଫନ୍। ସୋ ସେଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କ୍ରିନିଂ ବିକମ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଅର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। କିନ୍ତୁ କରୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍ରେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। Okay. ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ନାହିଁ, everything is fine, no history of hypertension ନାହିଁ, diabetes ନାହିଁ, sudden cardiac death ନାହିଁ, SCVD ଆମେ କହୁଛୁ SCVD atherosclerotic cardiovascular disease ଯଦି ନାହିଁ କି stroke ନାହିଁ, okay, it is 40। At the age of 40, routine investigation, particularly blood sugar and lipid profile, these two are very important।
बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल सर एटा आपण देले कहीं ना बहुत थर लोक मैंने इग्नोर करती तापर फैमिली हिस्ट्री थिले भी जब निजको फिट रखुवे मे बी स्क्रीनिंग को एते माने ध्यान देवेनी एते इंपॉर्टेंट बोली भावेनी जेबे कि दिस बिकम्स अ बिग प्रिवेंटिव फॉर पीपल ऑन दैट नोट सर हाइपरटेंशन विषय रे हमें बहुत गुड़े हाइलाइट्स तो आज करिचे लो ब्लड प्रेशर रे भी कार्डियक अरेस्ट हबार संभावना थाए कि पीपल हु हैव अ टेंडेंसी ऑफ लो बीपी दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज द ट्रायल्स गुड़िक अच्छी जो देखा जो मान लो ब्लड प्रेशर से लंजिविटी बेसी ओके लंजिविटी बेसी किंतु सिम्पटम्स बेसी सिम्पटम्स कौन ठिया मुंड बुलेदेला पड़गला भाया लगे पड़गला सो इफ लो हाइपरटेंशन केतुक डेफिनेट कजेस अच्छी से गुड़िक जब एक्सक्लूड हो गला इफ समबडी हैविंग ये जब हो 90/70 100/70 आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट किंतु जदि सिम्पटम्स हो मुंड बुले दूँ पड़गला भाई लगुच देन यू हैव टू आमको खोजा पड़ो जे लो ब्लड प्रेशर जी कंडीशन अच्छी से एक्सक्लूड करदे पड़ो जदि ना देन फॉरगेट अबाउट इट फिनिश सर बहुत गुड़े जिनस आज जाना पाइली किसी आमर व्यूअर्स मानू किसी क्लोजिंग नोट दबा चाहिए व्हेन इट कम्स टू द एटीट्यूड टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स coronary artery disease number one killer all over world including India से 80% जो डेथ किंबा मॉर्बिडिटी जोटा कहती सफरिंग 80% इज प्रिवेंटेबल आमर प्रॉब्लम होची पर्टिकुलरली इंडिया और साउथ ईस्ट डेवलपिंग कंट्री प्रिवेंशन एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाए ना रोग है आसिले हॉस्पिटल पशिले ट्रीटमेंट है कॉस्टली ट्रीटमेंट डेथ है कि भल हो गले कि कम्प्लिकेसन हो गले आमर हूँ मेडिकल साइंसटा यूँ आरंभ हो किंतु आपड़ जो देखिए इट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इज पीपल एट रिस्क कौन रिस्क माने कौन फॉर एग्जाम्पल मोर जदि फैमिली हिस्ट्री बापा कि माँ कि ब्रदर कि सिस्टर हार्ट डिजीज अच्छी ब्लड प्रेशर अच्छी डायबिटीज अच्छी कोलेस्ट्रॉल अच्छी मोर रिस्क so the intervention starts from that at the risk level then it comes pre-disease before disease before blood pressure comes before diabetes haba aguru cholesterol aguru it should be detected and prevented then disease if for example jodi diabetes अच्छी blood pressure अच्छी जदि ताको adequately और optimally treatment कराला next of the complication will be little delayed so unfortunately we are in the stage 4 we were detecting the disease in at the complication of the disease so body already compromised है सर so previous 3 जो important preventive जिनसटा that is already over right so मोर request रहिबो हमर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एवं वर्ल्ड हार्ट डे रे ड्यूरिंग दिस डेट 29th of September it is a day of लोक को जनाया पड़ो दे शुड बी अवेयर से जानवे सचेतन से ब्लड प्रेशर डायबिटीज स्मोकिंग अनहेल्दी लाइफस्टाइल लैक ऑफ एक्सरसाइज एवं सीडेंटरी लाइफस्टाइल ये सब को मिसई देले 80% जब आम रोगटा प्रिभेन्ट कर कहीं किसी चेष्टा करवानी डिजीजटा हो गला हॉस्पिटल को धाँ दौड़ होकर आसवे फैमिली मेम्बर आसवे कांदे पैसा खर्च करेंगे अल्टीमेटली कौन हम वी डू नॉट नो किंतु वंस देयर इज ए डिजीज हियर मीन्स ये खाली गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहि हार्ट डिजीज क्योर नहीं इट इज वर्स देन कैंसर कैंसर ट्रीटमेंट कले क्योर हुए हार्ट डिजीज that is not there once a heart disease is a lifelong heart disease and author of our chance is always there it's not that treatment stenting हो गला bypass surgery हो गला valve लग गला क्यों no it's all misconception at any moment there is a problem and once a disease is always a disease right. and you have to come to the hospital repeatedly if required so ये जो जिनस गुड़ाक आमर which is already everybody knows heart healthy diet
early recognition of blood pressure among diabetes, cessation or avoidance of tobacco in any form, and exercise. ये पांचटा जिनस जदि करवा किसी मात्रा आम सक्सेसफुल हवा ना मत लगुच ये सब जिन स्ट्रेस लाइफ एगुड़िक मोस्टली प्रिभेंटेबल कजेस जिते पारे जी संभव आम चेष्टा कले आम कि डिजीज इनसीडेंस कम कर ना किसी रास्ता नहीं नो वे आउट excellent sir. So on that note sir, gote recent notion achi ebe world heart day ro, that is don't miss a beat. ei narrative ro artha kon sir? amar every year 29th of September world heart day, this is on the occasion by the World Heart Federation eta palan kara jaye. So every year there is a theme. The theme usually it moves around preventive aspect of heart disease. Okay. So एथर जो अच्छी do not miss a beat. Miss mean heartbeat. जमती heartbeat टा सबल चलती from birth till death. Heartbeat टा सबल constantly कोटे 70, 52 or 60 to 90 rate चलती. That maintains life. So missing means if it stops then problems. So that means अर्थ होची हमें एटा को to keep on continuing beating जतिक प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छी से गुडी को हमको पालन करिबा ए गुडी को ऑलमोस्ट जो लास्ट प्रीवियस जतिक थीम गुडे अच्छी ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर एंड द ऑब्जेक्टिव इज अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ हार्ट डिजीज. Sir, आज आपण from a person who writes medicines and helps people understand तांकर एबे करंट स्थिति कोन अछि देहर थ्रू स्कैन्स, आज आपण गुडाई बिहेवियरल चेंजेस बतैचंती फॉर आवर व्यूअर्स एंड जो माने भी वीडियो टी को देखिबे से माने एथरो डेफिनेटली बहुत गुडे जिंस बुझिया को पाइबे जे केमिति हम बॉडी रे बहुत जिंस रिलेटेड थाए, केमिति जिंस गुडी को केयर न नेले से गुडी को बिगड़ी जाए. एंड आपणकर टाइम मो अनुसार आई थिंक मोस्ट वैल्यूएबल एटलीस्ट इन दिस सिटी. सो से आपन को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मोर दैट आप निजर बहुत इंपोर्टेंट वैल्यूएबल टाइम काढ़े के हमको एते गुडे इनसाइट्स आज देइछंती. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार, धन्यवाद. सो ए वीडियो टी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एंड डेफिनेटली निजर नियर एंड डियर वंस मन का संगे शेयर करंतु एंड देखा हबो हमर नेक्स्ट सेगमेंट रे. नमस्कार. नमस्कार.